Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, welcome to the next lecture of Advanced Database Systems Part 2. So in the previous lecture we have discussed about the principles of advanced database systems or distributed database systems and some basic definition of the difference between centralized and distributed database systems. So in this second part of the lecture we will be discussing about the different drawbacks or the problems with the distributed database systems. So since networks are slow and we might have limited network bandwidth and we have to minimize network utilization. Considering the networks are not necessarily slow. Networks have been getting faster. Even with the advent of 4G and 5G, they are getting faster. But even with the advent of new networks, the faster speed internets, the data retrieval is also becoming the faster. In the same way, when we don't used to have the aeroplanes or the trains, the normal travels between the different locations, the number of travels were low. But since the trains came into being, since the aviation industry came into being, the regular travel of the people have become very frequent. So that's why even before the hardware was very slow, the software were also very slow. But since hardware is increasing, is getting modernized, getting faster, the software is also getting very heavier. So as we say, the networks are getting faster, so the data retrieval is also getting faster. So whichever the company that provides the data, the information very faster, will eventually win the race. So that's why as the facility, as the resources are growing faster, the demand is also growing faster. That's why it is mentioned the networks are slow and we might have to limited network bandwidth and we have to minimize network utilization. So there are certain problems with the distributed database system. The first one is query processing, the catalog management, the object naming, and the update propagation, recovery control, and concurrency control. So let's discuss about these problems. In this lecture we'll be discussing about the first four problems. The first problem is query processing. So the query processing, there are several steps how the query is processed in the Oracle database management system. We'll be learning about the query processing in detail in the not only in the theoretical lecture but also in the lab. I'll be explaining you how the query is being processed step by step in Oracle database management system, and also the theoretical perspective how normally the query is processed in the database management system, not necessarily in the Oracle. Eventually, the objective is minimizing network utilization. Implies that the query optimization process itself need to be distributed, as well as the query execution process, as the query can demand data from different sites. When it demands data from different sites, means network utilization will be done in that query. So data will be distributed, data will become from different sites. So in order to minimize the network utilization, that query needs to be optimized. Suppose we have a database, supplier and sparse, and we have three relations: S, which contains S number and city. Somehow 10,000 rows are stored in site A, and then we have another table P, which contains P number and color, which can be say as the product number, and 100,000 stored tuples at site B. And we have SP, which is like a composite key, and we say which consists of S number and P number, that combines both relation S and P. We have like 1,000 stored tuples at like 10,000 stored tuples at the site A. So that assume that every stored tuple is 25 bytes at 200 bits long. Now say queries where S.S number equal to SP.S number. So S and SP, they are both available at the site A, but P.P number equal to SP.P number. P equal to P number and SP. P is available at site B.
and city equal to London and color is equal red. City is available at site A and color is available at site B. So this query requests the data from different sites. So aim of the query processing is to transform a query written in high level language, which is normally we call the structured query language, which is not a procedural language, but it explains how what kind of data is required, not how the data is to be retrieved, into a correct and efficient execution strategy expressed in low level language. Low level language, which is in terms of database management, is called the relational algebra. So after the finishing of this lecture, we'll be learning about what is relational algebra and what are the basic operations of the relational algebra, and to execute the strategy to retrieve the required data. So eventually this query will be minimized and will be optimized in a way that it gathers the data in a more efficient way from the different sites together, rather than directly converting that query into the code. So in the database management system, by calculating the different indexes के किस पे कौन कौन सी इंडेक्स लगी हुई है, by calculating the data dictionary contents के कहाँ से डेटा रिट्रीव होकर आना है, it will be transformed into the RQL or relational query language, and then it will be transformed into the code to retrieve the data. So this is basically the chart कि आपकी query जो है at the higher level, which is decomposed into the relational algebra expression, what is system catalog or database status, we will be learning about those in the proper lecture of query optimization जब हम इसको पढ़ेंगे. तो don't get confused about this chart. ये मैंने ऐसे ही जो है put up कर दिया फिलहाल. के बाद that आपकी query decompose होती है, then it is optimized and then the code is generated and the runtime query execution is done. So this is somehow the diagram that depicts the query processing and query optimization process of database management system. We'll be learning about that in detail in the following lectures. So the query is minimized. जिस तरह से I am giving you an example. For example, आपकी एक प्रोग्राम दिया जाता है, तो एक प्रोग्राम में मैं दो बंदों को दे दूँ तो वो मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द कैलकुलेटर कि आप इम्प्लीमेंट करें. सो इन कैलकुलेटर यू नीड टू इम्प्लीमेंट 4 ऑपरेशंस प्लस माइनस subtraction multiplication. In order to perform these 4 operations, you might have like 8 variables and 2 variables, 4 variables to store their result. For example, C equal to A C equal to A plus B, D equal to E minus F, and G equal to H multiplication J, and K equal to M divided by N. And then you go out and print C out C then you go out, print C, print D, print G, and print K. So one solution to achieve that is this. The second solution can be achieved like by writing C equal to A plus B and C equal to A minus B, C equal to A multiplication B,
and C equal to A division by B. And rather than creating those variables, you just create C over here and you can achieve the similar result. So over first solution you are creating like 12 variables, 8 variables to store to perform the operations and 4 variables to store their result. But in the second solution you are using only 3 variables to achieve the same exact thing. So this second solution is more optimized in terms of the first solution. Same way in query processing, the SQL query that can be requested by the manager, and you people try to write the SQL query. Maybe 2 to 3 people they write different SQL queries, but when it goes to the database management system, it tries to optimize that SQL query in terms of transforming it into the low level language, that RQL, and try to optimize to minimize the network utilization and resource utilization. So this is called query processing and query optimization. The catalog management. Second problem is catalog management. System catalog will include not only the usual catalog data regarding base relationship, base relevant, views, authorization, but also all the necessary control information to enable the system to provide the desired location, fragmentation and replication independence. So catalog, basically what is catalog? Whenever you want to read a book, there is a table of contents in the start of the book, and that table of contents which kind of information you are going to find in the rest of the book, कौन-कौन सी information कौन-कौन से page पे कौन-कौन से available. This is called the catalog or the table of contents. In the database management system, in the table it contains the tables and views, and that table contains actual data that you are looking for that is stored. But where you are going to store the information about those tables, कि कौन-कौन से tables जो हैं वो create किए हुए हैं, कौन-कौन से views create किए हुए हैं, कौन से table पे कौन सी कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, कौन से कंस्ट्रेंट का क्या मकसद है, कौन से इंडेक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, कौन से यूजर्स को कौन से टेबल पे कौन सी ऑथराइजेशन है, कौन सा यूजर कितना डेटा देख सकता है, कौन सा यूजर लॉगिन हो सकता है तो डिस्कनेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन यूजर है, कौन सा जस्ट व्यू कर सकता है, कौन सा अपडेट कर सकता है, कौन सा इंसर्ट कर सकता है. दिस इज ऑल अबाउट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट. Or simply it is called metadata, which is called data about the data. So tables they contain the data that you are looking for, but the catalog contains the information or the data about the data. तो जब भी आप कोई चीज क्वेरी परफॉर्म करोगे तो क्वेरी परफॉर्म करने से पहले ये सिस्टम कैटलॉग को एक्सेस किया जाता है कि भाई जो यूजर इस चीज को एक्सेस कर रहा है, क्या यूजर के पास राइट है इस चीज को एक्सेस करने के लिए, अगर राइट है तो कितना राइट है इस चीज को एक्सेस करने के लिए, और वो ऑब्जेक्ट जिसको एक्सेस करा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के मुख्तलिफ कॉलम्स कौन कौन से हैं, उस कॉलम्स में इंडेक्सेस किस पे लगी हुई हैं, उस कॉलम्स की प्राइमरी की कौन सी है, उसके कॉलम्स के कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से लगे हुए हैं. So this all of the information is stored in the system catalog. So the question arises, where and how should the catalog itself be stored? कि कैटलॉग आकर स्टोर कहाँ पे होगा? In the distributed environment, we have different sites, London site, New York site, French Paris site. The catalog will contain the information about all the sites. So there are some possibilities where to store the system catalog. The first possibility is the centralized. The total catalog is stored at exactly वंस एंड सिंगल सेंट्रल साइट, कि पूरे का पूरा कैटलॉग जो है हम एक सेंट्रल साइट पे स्टोर कर दें कि जिसको भी एक्सेस करना है उस सेंट्रल साइट से एक्सेस कर लें. द सेकंड कैटलॉग इज फुली रिप्लिकेटेड, कि टोटल कैटलॉग इज स्टोर्ड इन इट्स एंटायरली एट एवरी साइट. अब सेंट्रल साइट में क्या होगा, कैटलॉग एक जगह पे होगा तो वही जो हमारा द प्रिंसिपल है कि भाई नो रिलायंस ऑन सेंट्रल साइट, तो दिस विल बी वायलेटेड इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटी.
सेकंड इज द टोटल कैटलॉग इज स्टोर्ड इन इट्स इंटायरली एट एवरी साइट, कि हर साइट पे जो डिस्ट्रीब्यूट साइट है उस पे पूरे के पूरे डेटाबेस का जो है वो कैटलॉग हम स्टोर कर दें। मीन्स डेटा will that site will be containing only the limited data related to that particular site, लेकिन जो कैटलॉग होगा वो पूरी की पूरी डेटाबेस का अवेलेबल होगा, क्योंकि there is a possibility that you want to access the data from London site to the न्यूयॉर्क साइट, तो दूसरी साइड डेटा लेकर आना तो उसको कैटलॉग भी तो पता होना चाहिए ना, तो वो कहाँ से लेकर आएगा। तो हम रिप्लिकेट करते पूरे का पूरा कैटलॉग एक ही साइट पे। और द थर्ड पॉसिबिलिटी इज पार्टीशन, ईच साइट मेंटेन्स इट्स ओन कैटलॉग फॉर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड एट दिस साइट, द टोटल कैटलॉग इज द यूनियन ऑफ ऑल ऑफ दोज डिसजॉइंट लोकल कैटलॉग्स, के हर साइट अपना सिस्टम कैटलॉग रखे और जब भी जरूरत पड़ेगी तो रन टाइम पे, तो रन टाइम के पूरा जो कैटलॉग है डिसजॉइंट सबको कंबाइन करके पूरे का पूरा कैटलॉग जो है वो बन जाएगा और वहाँ से एक्सेस होगा। यानी कि जैसे मुझे मेरी क्यूरी लिखी जो कि मेरी साइट पे भी वो एक्सेस कर रही है, दूसरी साइट से भी एक्सेस करिए, तो वो मेरी साइट वाला कैटलॉग भी एक्सेस करेगी, फिर दूसरी साइट से भी वो कैटलॉग एक्सेस करके फिर वहाँ से डेटा लेकर आएगी। द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3, ईच साइट 1 क्या थी सेंट्रलाइज्ड और 3 क्या थी पार्टीशनड। ईच साइट मेंटेन इट्स ओन लोकल कैटलॉग, के पार्टीशन अपना होगा। इन एडिशन सिंगल सेंट्रल मेंटेन एंड यूनिफाइड कॉपी ऑफ ऑल दोस लोकल कैटलॉग, कि हर साइट पे उसका अपना लोकल होगा, उस सेंट्रल साइट पे पूरे का पूरा जो है कि कैटलॉग कंप्लीट अवेलेबल होगा किसी सेंट्रल साइट के ऊपर। तो जैसे ही अगर लोकल साइट कोई एक्सेस करना चाहेगी तो वो सेंट्रल साइट से दूसरी का साइट का वो कैटलॉग एक्सेस कर सकती है। प्रॉब्लम्स इन ईच पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये इश्यूज जो है सेंट्रलाइज में नहीं होते, डेटाबेस में डिस्ट्रीब्यूटेड में होते हैं कि आप कैटलॉग रखें कहाँ पे जहाँ से सर्च करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव 3 रूम्स, वो 3 रूम्स के अंदर हमारे पास HR का डिपार्टमेंट है जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है और हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो बिजनेस का डिपार्टमेंट है। तो उन तीनों से पहले हमें कैटलॉग ढूंढना पड़ेगा ना कि कौन सी अलमारी में ये डेटा कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो वो कैटलॉग कहाँ पे रखें, हर अलमारी में जो है वो अलग अलग उसका अपना कैटलॉग रखें, या कैटलॉग एक ही टेबल पे जाके हम सेंट्रलाइज लोकेशन भी रखें, या हर अलमारी में अलग अलग रख दें उसका और सेंट्रल पे भी रखें। तो दीज आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव डिस्कस्ड। अप्रोच 1 ऑब्वियसली वायलेट्स द नो रिलायंस ऑन अ सेंट्रल साइट ऑब्जेक्टिव, के पहला था जो हमने बात की कि इट वायलेट्स द सेंट्रल साइट, क्योंकि सेंट्रलाइज चीज़ होगी तो हर क्यूरी के लिए हमें सेंट्रलाइज साइट को एक्सेस करना पड़ेगा, तो हमारा वो फ़ायदा ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को बनाने का। तो अगेन वो कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइज आ गया, क्योंकि कोई भी क्यूरी, एनी क्यूरी कैन नॉट रन विदाउट द सिस्टम कैटलॉग। सो डेटा माइट बी अवेलेबल एट आवर ओन साइट, बट if we for each query if we have to go to the central site to access system catalog, तो फिर वो तो फजूल है ना। So approach 1 is not very feasible. What is approach 2? Approach 2 suffers from a severe loss of autonomy in that every catalog update has to be propagated to every site. Fully replicated, कि हर साइट पे जो है पूरे का पूरा जो है वो कैटलॉग अवेलेबल होगा। तो ये क्या वॉलेट करी है, अगेन लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। क्यों? इफ लंदन साइट इज मॉडिफाइड तो उसका डेटा में रिप्लिकेट करना है न्यूयॉर्क साइट पे, तो लोकल तो चीज़ हो ही नहीं ना फिर, कि लंदन पे तो मॉडिफाई कर रहे हैं लेकिन दोबारा हम दूसरी साइट पे जा रहे हैं न्यूयॉर्क पे, फिर जो जितनी भी साइट्स हैं, अगर 10 साइट्स है तो हम 10 साइट्स पे जाके वो चीज़ डेटा अपडेट करनी पड़ेगी। सो इट इज़ अ मोर वर्स कंडीशन। सो approach 2 suffers from severe loss of autonomy in that every catalog update has to be propagated to every site, हर साइट पर हमें अपडेट करना है। That doesn't seem to be very feasible solution. Approach 3 makes non-local operations very expensive. Finding a remote object will require access to the half the site on average. What is approach 3? के partition हो कि each site maintains its own catalog for objects and the total catalog in the union of all the site disjoint local catalogs. कि हर site अपना locally वो रखे, लेकिन जो non-local operations हैं they will be very very expensive.
उसको बार बार जो है वो दूसरी साइट पे जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी क्यूरी है जो कि 3 से 4 साइट्स के डेटा एक्सेस कर रही है, मतलब दैट क्यूरी नीड्स टू बी एक्सेस द सिस्टम कैटलॉग ऑफ 3 to 4 डिफरेंट साइट्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट क्यूरी, तो वो सिस्टम कैटलॉग के बाद फिर उसको दोबारा जाना पड़ेगा उसको डेटा को रिट्रीव करके लेकर आने के लिए। सो it will be very very expensive. It will be more efficient than these two, but very 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 expensive. Approach 4 is more efficient than approach 3. Finding a remote object requires only one remote catalog access, but violates the non-reliance on central site objective again. Okay, approach 4 क्या थी? combination of 1 and 3. 1 and 3 के क्या है कि 1 क्या थी कि central पे भी अवेलेबल हो और 3 क्या था कि लोकल भी अवेलेबल हो। मीन्स के अप्रोच 4 के अंदर लोकल, अगर ऐसी क्यूरी जो है वो 3 से 4 साइट्स एक्सेस कर रही है तो वो अपना डेटा तो लोकली करेगी, बाकी जो डेटा डिक्शनरी के हवाले से वो उसको सिर्फ सेंट्रल साइट पे जाना पड़ेगा जिसमें सारी साइट्स का उसको डेटा मिल जाएगा। तो अगेंस्ट नो रिलायंस सेंट्रल साइट का जो ऑब्जेक्टिव है वो वायलेट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर। सो फॉर द सिस्टम कैटलॉग from these 4 approaches you need to compromise on any of the solution to store the system catalog. There's no other solution to it. तो आपको इन चारों में से कोई ना कोई एक बेस्ट सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ेगा अपने हिसाब से, and you need to perform the storage of system catalog accordingly. ठीक है, अब कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो वॉलेट तो होंगी, लेकिन क्या करें, we need to do the we need to manage the distributed databases. Same way अगर आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ी होगी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ी तो मैं वरना आपको एक और एग्जांपल देता कि हम नॉर्मलाइजेशन में वी गो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन. नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली रिमूव द रिडंडेंसी ऑफ द डेटा. तो इन किन सिचुएशन में अगर हमारे पास अगर एफिशिएंसी चाहिए होती है तो हम और डेटा स्टोरेज कम करनी होगी तो हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे. लेकिन अगर डेटा स्टोरेज कम होती है और एफिशिएंसी को हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो देन वी गो ऑन टू द डी नॉर्मलाइजेशन अप्रोच. अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, डी नॉर्मलाइजेशन. तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेप जो है जो भी है हम एक्सट्रीम लेवल तक जाएं. हमें ट्रेड ऑफ ढूंढना पड़ता है कि हम किस तरह से डेटाबेस को एफिशिएंटली जो है वो मैनेज कर सकें. दिस इज द ड्यूटी ऑफ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कि ही नीड्स टू थिंक to provide the accessibility to data in the most efficient way possible. कहाँ पे इसको क्या करना है, कहाँ पे इसको क्या करना है. He needs to take the decision. Another problem with the databases, distributed databases, is object naming. Object naming is a significant issue for distributed systems in general. The possibility that two distinct sites X and Y might both have an object, say a tuple or a view called A, implies that some mechanism, typically qualification by site name, will be required in order to disambiguate to guarantee system wide name uniqueness. अगर कोई ऐसी साइट्स हैं X और Y जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है A जो कि सिमिलर है. अब अगर हम लिखें select asterisk from A, तो select asterisk from A कहाँ से लेकर आएगा? वो X से लेकर आएगा और he retrieve that from the Y information. This create the problem, this ambiguity, this creates a problem क्योंकि we need to provide central view to the user कि he or she doesn't need to care कि कहाँ से डेटा रिट्रीव होके आ रहा है. ठीक है. So in order to achieve that, if qualified names such as x.a and y.a are exposed to the user, के अगर हमें ये बताएं कि अगर आपको साइट x से डेटा चाहिए तो x.a लिखते हैं, अगर आपको साइट y से डेटा चाहिए तो y.a लिखते हैं. However, the location independence objective will clearly be violated. कि लोकेशन इंडिपेंडेंस है कि उसको नहीं पता चलना चाहिए कि कहाँ से डेटा आ रहा है, तो वो चीज़ वायलेट होगी. वरना x.a और y.a इज अ सिंप्लीफाइड सोल्यूशन टू अचीव दैट, बट इट विल बी वायलेटेड बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस नेचर कि वो लोकेशन इंडिपेंडेंस की यूजर को कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ से डेटा लेकर आ रहा है. फॉर इट्स सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज द R-steric approach. So let's learn about what is R-steric approach. This name referred by the user can then be mapped to system-wide name, which is globally unique internal identifier for the object. So
there's a standard approach R which gives a standard name in order to distinguish each object from another object, which contains 4 variables or parameters. The first parameter is creator ID, the ID of the user who created the object, creator site ID, the ID of the site at which the create operation is entered, and the local name, the unqualified name of the object, and birth site ID, the ID of the site at which object is initially stored. So the creator ID, the ID of the user who created the object, किसने create किया है, creator site ID कि कहाँ से जो है वो किस साइट से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, लोकल नेम, द अनक्वालिफाइड नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी आप नाम देना चाहें, एंड बर्थ साइट आईडी कि कहाँ पे क्रिएट हुआ है. देयर माइट बी डिफरेंस बिटवीन क्रिएटर एंड बर्थ साइट. हो सकता है मैं लंदन पे बैठ के न्यूयॉर्क में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, सो द क्रिएटर साइट आईडी विल बी डिफरेंट एंड द बर्थ साइट कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट एक्चुअली स्टोर होगा, क्रिएट होगा, दैट माइट बी डिफरेंट. So example, Maryland, we can say this is the creator ID, the name of the user. At New York, कहाँ पे वो साइट क्रिएट हुआ है. States is the name of the object. At London के कहाँ पे वो चीज़ क्रिएट करनी है. तो this can be given as a unique identifier for the object. And another approach is we need to create synonym for the same object in order to provide the unique name. For example, create synonym M states for Maryland at New York dot states London. अगर आपने Oracle के अंदर पहले डेटाबेस में आके synonyms पढ़े होंगे तो synonyms क्यों बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक हमारा टेबल बनाया हुआ एम्प्लॉइज अंडरस्कोर लंदन, एम्प्लॉइज अंडरस्कोर न्यूयॉर्क, या डिपार्टमेंट्स अंडरस्कोर सॉरी, और भी फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि भाई फैकल्टी अंडरस्कोर IICT, फैकल्टी अंडरस्कोर नेचुरल साइंस, फैकल्टी अंडरस्कोर आर्ट्स. तो ये फैकल्टी अंडरस्कोर आर्ट्स, फैकल्टी अंडरस्कोर नेचुरल साइंस, ये नाम है जो हमने टेबल्स के दिए हैं. लेकिन इतना बड़ा नाम हम क्यूरी में लिखेंगे तो क्यूरी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और हमारे लिए लिखने में भी, टाइप करने में भी ज़्यादा लगता है. तो उसको हम शॉर्टन करके उसको एक निकनेम दे देते हैं. दैट निकनेम इज क्रिएटेड विद द क्यूरी क्रिएट सिनोनिम M स्टेट्स फॉर, उस पूरे जो है वो जो यूनिक आइडेंटिफायर है उसको आप जो है वो दे सकते हैं. ठीक है. सो नाउ आइदर यू राइट सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम मैरीलैंड @NewYork.State @London, तो आपको वही डेटा आएगा, या आप सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम M स्टेट्स लिखेंगे तो आपको वही डेटा आ जाएगा. तो हमने इसको एक निकनेम दे दिया. एक हमारे पास DDL कमांड है क्रिएट सिनोनिम. अब ये भी चीज़ हमारे जाके डेटा डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगी. ठीक है, कि भाई M स्टेट्स से करस्पॉन्डिंग क्या चीज़ है. तो हम यूज़र को जो वहाँ पे न्यूयॉर्क में बैठा हुआ उसको हम कहेंगे N स्टेट्स दे सकते हैं, और जो हमारे लंदन में बैठा उसको हम L स्टेट्स दे सकते हैं. ठीक है. केसेस ऑफ नेम्स. इन फर्स्ट केस द सिस्टम इज यूजिंग द लोकल नेम. जो फर्स्ट केस है, सिस्टम वाइड नेम बाय अज्यूमिंग ऑल द obvious defaults. So in the first case, system is using the local name, system wide name by assuming all the obvious defaults, namely that object was created by this user, it was created at this site, and it was initially stored at this site. तो in the first case जो है वो local name इस्तेमाल कर रहे हैं कि सारे जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसका नाम, उसके किसने यूज़र ने क्रिएट किया और कौन सी साइट पे क्रिएट किया और कहाँ पे वो स्टोर हुआ. सेकंड केस में सिस्टम इज यूजिंग द सिनोनियम. द सिस्टम डिटरमाइंस द सिस्टम वाइड नेम बाय इंटरोगेटिंग द रेलेवेंट सिनोनियम टेबल. अब सिनोनियम टेबल एक डेटा डिक्शनरी टेबल है जो कि डेटाबेस में जाके क्रिएट होता है, और उसके अंदर जितने भी टेबल्स हैं या व्यूज़ हैं आप उनका सिनोनियम दे सकते हैं. ठीक है. ईच साइट मेंटेन्स अ सिनोनियम टेबल. A synonym table contains a catalog entry for every object born at that site and catalog entry for every object currently stored at that site. ठीक है, कि कहाँ पे वो बॉर्न हुआ, हो सकता है कि वहाँ पे बॉर्न हो लेकिन स्टोर किसी और साइट पर, जो कि हमने प्रीवियसली देखा. एंड कैटलॉग एंट्री फॉर एवरी ऑब्जेक्ट करंटली स्टोर्ड एट दैट साइट, और जो वहाँ पे करंटली जो है वो अवेलेबल हो. If a user now issues a request for referring to the synonym M states, अगर यूजर उसको रिक्वेस्ट करता है सिनोनिम टेबल को स्टेट्स करने के लिए, for the system looks up the corresponding system wide name in the appropriate synonym table. तो जिस तरह से मैंने आपको कहा कि वो
करेस्पॉन्डिंग जो है वो सिनोनिम टेबल में देखेगा, उससे करेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कौन सा जिसको यूजर एक्सेस करना चाहता है. नाउ इट नोज द बर्थ साइट के वो लंदन में क्रिएट हुआ है फॉर एग्जांपल, एंड इट कैन इंटीग्रेट द लंदन कैटलॉग, पर वहां पे जाके उस कैटलॉग को एक्सेस करके वहां पे वो डेटा लेकर आ सकता है. इफ ऑब्जेक्ट हैज माइग्रेटेड टू अनदर साइट, लॉस एंजलिस साइट में माइग्रेट हो चुका है, देन द कैटलॉग एंट्री लंदन विल से एज मच एज एंड सो द सिस्टम कैन नाउ इंटीग्रेट द एलए कैटलॉग. तो लंदन साइड पे लिखा होगा कि अब ये जो है ऑब्जेक्ट यहाँ से माइग्रेट कर चुका है लॉस एंजलिस साइड पे. ये भी हो सकता है कि आप एक साइड से दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट को माइग्रेट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं. If the object has migrated from LA to New York, then the system will insert a New York catalog entry and delete the LA catalog entry and update the London catalog. तो जो लॉस एंजलिस की जो अगर वो माइग्रेट हो गया फ्रॉम एलए टू न्यूयॉर्क, अगेन एलए से न्यूयॉर्क चला गया, तो वो न्यूयॉर्क की कैटलॉग एंट्री जो है वो उसमें एंटर करेगा. एलए की कैटलॉग एंट्री जो है वहां पर डिलीट कर देगा जो लंदन में वहां से मूव हुआ, एंड अपडेट द लंदन कैटलॉग एंट्री, और वहां से जो है वो उसको अपडेट कर देगा. ठीक है. सो दिस इज एज वी से द एंड ऑफ द सेकंड lecture, and we'll discuss about the update propagation and rest of the problems in the next coming lecture. Okay guys, thank you, Allah Hafiz, and take care.